अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है, आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine and doing well. Students, previously we discussed lesson number 8, the rainbow. This unit has been taken from grade 6 English book, Punjab textbook board, Lahore. Students, we have studied all the text, the poem which has been written by Christina Rossetti. The poetess Christina Rossetti has beautifully compared the beauty of rainbow with the beauty of sailing boats and the bridges which are made over the river. She says that as you look at the scene of a sailing boat, then you can compare it with the sailing clouds over the sky. Similarly, you can compare the bridges over the rivers. We can compare such bridges with the rainbow that connects earth to the sky. But the very important thing to notice is that the scenery which is high above in the sky, the bridge that connects earth to sky, is far more prettier than the scenery which we see at the earth. So students, today we will see some of the difficult words used within this lesson. You can see here is the text, the poem written by Christina Rossetti. And we have discussed so much about this text in previous class. You can even check that. So today we will discuss some difficult meanings of this poem and also the exercise which is grammar portion written below after this text. So let's begin with the difficult words and their pronunciation. जी तो स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ वर्ड्स जो कि मैंने टेक्स्ट में से निकाले हैं, आप देख सकते हैं. द वर्ड वी हैव डिस्कस्ड सेल. सेल मीन जहाज चलाना, कश्ती रानी करना, कश्तियों का समुद्रों पे तैरना, इसको कहते हैं सेलिंग बोट्स, सेलिंग ओवर द रिवर्स. यू कैन सी द प्रोनाउंसिएशन सेल एंड मीनिंग जहाज चलाना या कश्ती रानी करना. सिनोनिम्स आप देखें तो फ्लोट हो सकता है, कश्तियों का पानी के ऊपर तैरना फ्लोटिंग कहलाता है. सेकेंड वर्ड इज अक्रॉस. अक्रॉस होता है आर पार होना, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक. सो द सिनोनिम इज ओवर. लाइक वी कैन से द ब्रिज अक्रॉस द रिवर और द ब्रिज ओवर द रिवर. ब्रिजेस. स्टूडेंट, ब्रिजेस, ब्रिज जो वर्ड है वो हमारे पास नाउन है. ब्रिज होता है पुल. पुल आपने देखे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करते हैं. ब्रिजेस हमारे पास होता है वर्ब. ब्रिजेस का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने वाला पुल जो है, ये वर्ब के तौर पे यूज होता है, इसलिए मैंने इसका मीनिंग लिखा है पुल बनाना. इट मीन्स लिंक, अ लिंक और अ कनेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अदर वर्ड इज प्रिटी व्हिच मीन्स अट्रैक्टिव, और उर्दू में हम इसे कहते हैं खूबसूरत, और यू कैन से इवन ब्यूटीफुल. देन वी हैव हेवन. Heaven, students, जन्नत को कहते हैं. The other word or synonym of heaven is paradise. You can also say the paradise. Then other word is builds. Again, the word we use build or building, उसको noun की तरह use करते हैं. But when we use builds, so builds mean तामीर करना, to construct something.
Students, you can find such meanings from the text and memorize them at home. Okay, students, now we are going to commence grammar portion of this text. So the number one exercise is position of preposition. Students, आप देख सकते हैं कि the word preposition itself says preposition. इसके दो मतलब हैं. Preposition किसी जगह से पहले की जगह, और position किस जगह से पहले हमें करनी है, noun से पहले. Normally preposition precedes noun. Student precedes का मतलब होता है पहले आने वाला. So preposition, ये position दी जाती है noun से पहले. You can see the book is on the table, the fish is in the pound. So on and in are placed before the noun. ऐसे words जो हमें किसी जगह का पता देते हैं, in the table, on the floor, above the ground, जो लोकेशन को ओरिएंट करते हैं उनको हम कहते हैं preposition, और इनकी पोजीशन कहाँ आती है, noun से पहले. That's why we call them all preposition. Look at the picture and mark the cross. Students, now we will see if these sentences are true or false. If the position located by the preposition is right, we will mark this sentence with tick. If the position given by preposition is wrong according to the sentence, then we will mark the sentence as false. Table is in front of the sofa. First of all, students, हम देखेंगे कि इसमें preposition कौन सी है. In front of is the preposition. In front. In front का मतलब होता है सामने, parallel, किसी चीज के facing area पे सामने. So you can see कि जो table है वो सोफे के बिल्कुल सामने है. So that's why table is in front of the sofa. This statement is correct. So we are putting tick here. Number 2, the books are on the table. किताबें मेज के ऊपर हैं. So you can see, yes, these books are on the table. So this statement is also correct. The lamp is in the table. Here, students, you can see that the preposition is in. So आप देख सकते हैं कि लैंप मेज के अंदर है. तो क्या यहाँ आपको लैंप मेज के अंदर नजर आ रहा है या उसके ऊपर नजर आ रहा है? ये स्टेटमेंट ऐसे होनी चाहिए थी, द लैंप इज ऑन द टेबल. अदरवाइज ये स्टेटमेंट गलत है. तो लेट्स पुट अ क्रॉस ओवर दैट. द जग इज बिटवीन द ग्लासेस. बिटवीन होता है दरमियान में. सो यस, यू कैन सी दो ग्लासों के दरमियान जग है. सो वी कॉल इट द जग इज बिटवीन द ग्लासेस. That's a true statement. Okay, let's move forward and check. There is an other statement. The parrot is on the cage. On होता है स्टूडेंट किसी चीज के ऊपर होना. क्या पैरट केज के ऊपर है या अंदर है? In the cage. So parrot is in the cage. This statement is also incorrect. Now rewrite the sentences to describe the correct position of each subject. ओके तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं. हमारे पास सही सेंटेंस क्या आ जाएगा? द पैरट इज इन द केज. केज कहते हैं स्टूडेंट्स पिंजरे को. पैरट है तोता, तोता पिंजरे के अंदर है. ये इसका सही सेंटेंस है. बाकी ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है हम उसको सही कर लेते हैं. द लैम्प इज ऑन द टेबल. लैम्प टेबल के ऊपर है, ऊपर पड़ा है. तो ये हमारे पास सही हो गया स्टेटमेंट. ओके, नाउ रीराइट. ओके, वी हैव डन दिस वन. ट्रांजिशनल डिवाइसेस. स्टूडेंट, ये जो वर्ड है ट्रांजिशनल और ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कहते हैं एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होने वाली जो अमल होता है उसको कहते हैं ट्रांजिशन कहते हैं. So transitional devices हम क्यों यूज करते हैं? Transitional devices are words and phrases that help to connect thoughts. जो हमारे आइडियाज हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो ख्यालात हैं, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं. Transitional devices ऐसे अल्फाज और ऐसे phrases हैं. phrases होता है लफ्जों का मजमूआ, जो थोड़ा सा पार्ट हो सेंटेंस का, उसको हम phrase कहते हैं.
ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसे अल्फाज और ऐसे फ्रेज हैं जो मदद करते हैं हमारे ख्यालात को कनेक्ट करने में. These devices can be used to guide the reader through ideas. ये devices यूज की जाती हैं रीडर को आइडियाज के मुतालिक गाइड करने के लिए. To build an argument या एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने के लिए, draw conclusions नताइज अखज़ करने के लिए, एंड कंपेयर और कंट्रास्ट एलिमेंट या फिर एलिमेंट्स को कुछ अल्फाज को या फ्रेजेस को कंपेयर या कंट्रास्ट करने के लिए. सो ये कुछ फंक्शंस हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस के. नंबर 1 इज दे हेल्प टू कनेक्ट थ्रू थॉट्स. Number 2 is these devices can be used to guide the reader through ideas. Number 3, build an argument. Number 4, draw conclusions. Number 5, compare and contrast element. So let's see the examples and then you will get to know how we can use such transitional devices. Number 1 is addition. This column says that these words are used to add some information. Now look at the words and, also, in addition to. Students हम ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल करते हैं जब भी हम कोई सेंटेंस फ्रेज पैराग्राफ कोई भी टेक्स्ट जब हम लिखने बैठे या उसके बारे में हम बात करें और उसमें हम इस तरह से वर्ड्स यूज करें. Today we are going to introduce a new shopping store in the market and there will be more groceries present in that shopping store. So students, we are introducing new information. एक shopping store open हो रहा है इस town में and उसमें मज़ीद groceries भी होंगे. Also there will be a playland for kids. So now I am introducing another information by saying also. In addition to all such luxuries, we are also introducing a cafe hotel within that shopping store. So now you can see I am adding another information. So जितना भी मैंने अभी तक टेक्स्ट आपके सामने बोला है जो एग्जांपल एक कोट किया उसमें आप देख सकते हैं जब भी मैं न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करने लगती हूँ so I use the word and also in addition to. For कंट्रास्ट के लिए हम कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं. You can see कि हम इसको compare और contrast elements के लिए भी use करते हैं. So now look at this how we can use it for contrast. If we are going to introduce an information, but we are changing the perspective. अगर हम कोई new information को तारीफ कराना चाह रहे हैं, लेकिन हम अपना idea जो उसको change करते हैं आगे या हम अपनी जो चीज़ introduce कराई है उसका दूसरा पहलू भी बयान करते हैं तो हम use करेंगे but. So we were talking about a shopping store. So if I will continue such ideas, so we can say, but on Saturday and Sunday, this store will remain off. मैंने इतनी सारी luxuries introduce कराने के बाद एक contrasting element डाल दिया इन पे Saturday और Sunday को ये off रहेगा. Now ever, this is another word we use for contrast. On the other hand का भी मतलब होता है दूसरी तरफ दूसरी बात में. On one hand, we are introducing many luxuries, many benefits to the public. On the other hand, it has some drawbacks. It has some disadvantages. So these words are used for contrast. Now for comparisons, if you are putting two things in comparison, you will use such words. Similarly, आपने कोई एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है और उसी जैसी आप दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं सो आप कहेंगे कि सिमिलरली ऐसी ही चीज़ जैसी हमने देखी थी मार्केट में हमें बिल्कुल वैसे ही स्टोर में मिल रही है. इन द सेम वे बिल्कुल उसी तरीके से ये भी कंपैरिजन में हो. आपने कोई एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है आपने किसी के बारे में बात की है और सेम उसी तरीके से आपने एक और चीज़ के बारे में बात किया तो यू विल यूज़ द वर्ड इन द सेम वे. Compared to, this shopping store has been compared to the previous stores of the town. So in this way, comparison जो है उसके लिए हम use करते हैं word compare to. Illustration, for example, illustration में student हम new information introduce कराने जाते हैं लेकिन new information introduce कराने के लिए हम कोई strategy अपनाते हैं. For example, हम कोई पिक्चर इंट्रोड्यूस करा देते हैं कोई टेबल कोई चार्ट कोई स्टैटिस्टिक्स
इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंट, टू इलस्ट्रेट, अपनी बात की वजाहत देने के लिए हम इलस्ट्रेशन यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं. नाउ सीक्वेंस, अगर हमने कोई स्टोरी है जिसके बारे में बताना है, पहले उसमें ये हुआ, दूसरी दफ़ा ये हुआ, देन उसके बाद ये हुआ, तो सीक्वेंस में ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, फर्स्ट, नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड्स, देन. उसके बाद इफेक्ट. इफेक्ट कैसे कॉज करते हैं? हम ये काम करना चाह रहे थे बिकॉज कल छुट्टी है, इसलिए हमें आज ही अपना ये काम मुकम्मल करना. बिकॉज, क्योंकि, देयरफॉर, ताहम, एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में. तो ये लफ्ज़ हम इसलिए यूज़ करें कि हम इफेक्ट शो करा रहे हैं. कोई भी बात करने के बाद अगर हम ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, we are going to market because tomorrow is off. We have bought so many things, therefore we wanted to go home. So we have gone to shopping store. As a result, we have bought so many things. So इस तरह के words introduce करा के हम effect बता सकते हैं. हम गए थे इसलिए हमने ये किया. Conclusion. Conclusion कहते हैं results को, consequences को. Conclusion के लिए हम words use कर सकते हैं in other words. इन अदर वर्ड्स में हम कोई सारी बात करके उस पर उसकी समरी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स. ऑन द होल, टू सम अप, जिसमें हम सारे ख्यालात को सम अप कर सकते हैं. So students, you can see that there are many categories for transitional devices. We have addition, contrast, comparison, illustration, sequence, effect, and conclusions. And you can see that every category has its own particular vocabulary. एडिशन के लिए हम ये वर्ड्स यूज करें, कंपैरिजन के लिए ये वर्ड्स यूज करें, सीक्वेंस के लिए. सो दीज ट्रांजिशनल डिवाइसेस हेल्प टू कनेक्ट थॉट्स, used as guide for the reader to connect through ideas, build an argument, draw conclusions, compare and contrast. इन सब के लिए हम transitional devices use करते हैं. Identify and write the transitional devices that you find in this poem. Okay, अब हमें इस poem में से वो वाले ट्रांजिशनल डिवाइस जो हमें मिलते हैं वो हमें निकालने हैं और उनके बारे में लिखना है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टेक्स्ट एंड फाइंड ऑल द ट्रांजिशनल डिवाइसेस व्हिच आर गिवन इन दिस टेक्स्ट. Okay students, here is the text. So you can see I have underlined all these transitional devices used within the text. We have the word and, that shows addition. We have but, that shows contrast. We have that shows a summary, explanation, or effect. Then we have as, pretty as. So the word as shows that we are going to introduce the effect. Is prettier far than these. It's again a summary point that sum up all the information. These are the expected transitional devices we have found in the text. आप इस तरह की और भी बहुत सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस किसी भी टेक्स्ट में से निकाल सकते हैं. इनका मतलब और फंक्शन आप अच्छे से अब समझ चुके हैं. आप किसी भी टेक्स्ट में ट्रांजिशनल डिवाइसेस फाइंड कर सकते हैं. So let's move forward to another exercise. Now we have point D. Combine the pair of sentences below into one sentence using appropriate transitional devices. स्टूडेंट्स, एक ट्रांजिशनल डिवाइस को इसे यूज करते हुए आपने इन दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाना है. सो द वर्ड्स वी आर गिवन इज बिकॉज, देयरफॉर, सो, बट, एंड. नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 1. Fatima got home late. She missed her TV program. सो पहली कंडीशन में हमारे पास वर्ड है फातिमा घर देर से पहुंची. उसने अपना टीवी प्रोग्राम मिस कर दिया. सो वो घर देर से पहुंची है. उसके बाद क्या है? बिकॉज, देयरफॉर, सो, बट, एंड. स्टूडेंट्स, ये इफेक्ट है. घर देर से पहुंचने का इफेक्ट क्या है कि उसने अपना प्रोग्राम मिस कर दिया. तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे सो, बिकॉज सो हमें बताता है कि फातिमा घर देर से पहुंची इसलिए उसने अपना टीवी प्रोग्राम मिस कर दिया. I'm going to write these words here. Fatma got home late, so she missed her TV program.
सो यूज करने से हम इसको एक ही सेंटेंस बना सकते हैं। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। खुदा ने मुल्क बनाए और इंसान ने कस्बे। So, अब ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एंड। खुदा ने मुल्क बनाए और इंसान ने कस्बे, तो इसलिए हम और लफ्ज़ यूज़ करेंगे। हमाद मिस्ड द बस, ही वोक अप लेट। अब ये इफेक्ट है, हमाद ने बस मिस कर दी क्योंकि वो लेट उठा, बिकॉज। यहाँ पे क्योंकि यूज़ करेंगे विच इज़ बिकॉज। आई वेंट देयर, ही वॉज एब्सेंट। मैं वहाँ गया मगर वो एब्सेंट था, but he was absent. The weather was warm. जमशेद turned on the air conditioner. Again ये इफेक्ट है, वेदर गर्म था इसलिए जमशेद ने AC ऑन कर दिया। तो इस यहाँ पे हमारे पास वर्ड है therefore, ताहम, therefore. Writing skills. Write a summary of the poem. Students, summary होता है किसी भी टेक्स्ट का खुलासा। आपने इससे जो सारी पोएम पढ़ी है जो कि बहुत आसान है, आपने इसका एक छोटा सा खुलासा तैयार करना है। 3 से 4 वर्ड्स में आपने लिखना है कि इस पोएम में क्रिस्टीना रोसेटी ने क्या बयान किया है। सो ये आप पोएम स्टार्ट, आप समरी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। द पोइटस सेज दैट as the boat sail on the river, similarly the clouds sail over the sky. 3 से 4 लाइनों में आप इसकी छोटी सी समरी बता सकते हैं कि इस पोएम में पोइटस क्या कहती है। Write a paragraph of 50 to 60 words on the rainbow. First, make a mind map and include appropriate keywords and structure to develop the focus of the paragraph. आपने एक पैराग्राफ लिखना है 50 से 60 वर्ड्स का। चंद लाइनें होती हैं स्टूडेंट्स, 2 से 3 लाइनें। आपने पैराग्राफ लिखने की कोशिश जरूर करनी है। टॉपिक है आपके पास द रेनबो, इस टॉपिक पे लिखनी है। फर्स्ट, मेक अ माइंड मैप। सबसे पहले आप अपने जहन में एक नक्शा बनाएं कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्यों लिखना चाह रहे हैं, उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे। अगर आपके पास एक टॉपिक आता है रेनबो, तो आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं। आप रेनबो के कलर्स बता सकते हैं, आप बता सकते हैं रेनबो अपीयर कब होती है, आफ्टर रेन, किस तरह से बनती है रेनबो, आप ये बता सकते हैं। देखने में कैसी लगती है, कितनी हसीन, कितनी दिलकश होती है, आपको उसकी अपीयरेंस जो है वो कैसा इफेक्ट शो करती है। ये सब एक माइंड मैपिंग है। एंड इंक्लूड अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स, और मुनासिब अहम अल्फाज उसमें डालें। कौन से कीवर्ड्स आप डालना चाहते हैं, जिससे कि अभी मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए, कलर्स ऑफ रेनबो, अपीयरेंस ऑफ रेनबो, स्ट्रक्चर ऑफ रेनबो, मेकिंग ऑफ रेनबो, ये कीवर्ड्स हैं, किस तरह से ये सारे काम करते हैं। एंड स्ट्रक्चर टू डेवलप द फोकस ऑफ द पैराग्राफ, और अपने जो पैराग्राफ आपने लिखना है उसको फोकस करें कि उसका स्ट्रक्चर, उसका खद-ओ-खान, उसका खाका आपने किस तरह से बनाना है। एक आपने माइंड मैपिंग करनी है, कौन कौन से कीवर्ड्स आपने इंट्रोड्यूस करने हैं जिनके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। सेकेंड ये कि आप अपने पैराग्राफ्स को स्ट्रक्चर कैसे करने वाले हैं। सो माइंड मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट जब भी लिखने बैठे उससे पहले सोचें कि आप उसमें क्या ऐड करना चाह रहे हैं। So here you can see there is a diagram, we call it web diagram. So क्योंकि वेब की सूरत में डायग्राम बनी है, so इसमें कुछ कीवर्ड्स भी दिए हैं, माइंड मैपिंग भी दी है, जिससे आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि आप अपनी जो राइटिंग है उसमें आप क्या लिखने वाले हैं। सो द रेनबो, रेन ड्रॉप्स, रेनबो की बात होगी तो रेन ड्रॉप्स की बात होगी। रेन ड्रॉप्स होते हैं, उनमें से लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो आपकी रेनबो बनती है। रेनिंग क्लाउड्स, रेनिंग क्लाउड्स आते हैं, देन रेन होती है, उसके बाद उनमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इस तरह से आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो सब रेनबो से कनेक्ट करते हैं। सनलाइट, ऑब्वियसली सनलाइट होगी तो रेनबो बनेगी। जब रेनबो बन जाती है उसके बाद वो किस तरह की होती है, उसके ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं। रेनबो कौन से स्काई पे बनती है, ब्लरी क्लाउडी स्काई पे या क्लियर स्काई पे। सो क्लियर स्काई पे बनती है, कैसे बनती है। सो ये कुछ की वर्ड्स हैं, ये यूज करते हुए आप एक खाका तैयार कर सकते हैं अपने पैराग्राफ का, देन आप बहुत अच्छे से उनको अपने अल्फाज में ढाल सकते हैं। So students, try to do this activity at home. This is very beneficial for your creative writing task. Write a paragraph of 50 to 60 वर्ड। एक पैराग्राफ बस लिखना है आपने, सिर्फ 50 से 60 अल्फाज का, और उसका आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये देखना है, माइंड मैप करना है क्या कौन से कीवर्ड्स आप उसमें डालना चाह रहे हैं। Okay, here we have oral communication skills.
स्टूडेंट इसके बारे में घर में आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, किस तरह एक करेक्टर जो है वो दूसरे करेक्टर के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, उसके रिप्लाई में उसको किस तरह से मैसेज का जवाब आता है, ये देखना है आपने। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ऑरली कैसे आपने कम्युनिकेट करना है। ओके, मदर, हमाद, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। पहला डायलॉग जो हमारे पास जिस करेक्टर के थ्रू है वो है मदर। सो मदर अपने बेटे से पूछ रहे हैं, हमाद आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। तो हमाद आगे से कहते हैं, आई नो मम्मा, मैं जानता हूँ मम्मा, बट आई कांट फाइंड माई क्लासेस, लेकिन मुझे अपने चश्मे नहीं मिल रहे, मुझे अपनी ऐनक नहीं मिल रही, चश्मा नहीं मिल रहा। मदर, दे आर ओवर देयर ऑन द डाइनिंग टेबल। वो देखें ये वहाँ डाइनिंग टेबल पे पड़े हैं। हमाद, वेयर आर माई सॉक्स, मेरी जुराबें कहाँ हैं, आई कांट फाइंड देम ईदर, मुझे वो भी नहीं मिल रही। आप देखें किस तरह से मदर ने उसको इंट्रोड्यूस कराया कि बेटा आप स्कूल के लिए लेट हो रहे, और बेटा आगे से बता रहे हैं कि मुझे चश्मा नहीं मिल रहा, अब मुझे जुराबें नहीं मिल रही। ये कन्वर्सेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है। आप कोशिश करें कि घर में इस तरह अपने बहन भाइयों से, अपने टीचर से, अपने क्लास फेलो से इस तरह इंग्लिश में ऑरली कम्युनिकेट करें। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं, कोई सिचुएशन क्रिएट करें, कोई भी अपनी क्लास में, घर में, और उस सिचुएशन के मुताबिक एक दूसरे से बातचीत करें। नाउ मदर सेज दे आर इन योर ड्रॉर। मदर उसको इसके रिस्पॉन्स में उनकी जगह बता रहे हैं, आपकी सॉक्स आपके ड्रॉर में पड़ी है, द्राज में। हमाद, एंड व्हाट अबाउट माय बैग, और मेरा बैग कहाँ है। मदर, इट इज बिहाइंड द चेयर, वो कुर्सी के पीछे है। यू शुड गेट योर थिंग्स रेडी द नाइट बिफोर, आपको अपनी तमाम चीजें एक रात पहले से तैयार करके रखनी चाहिए। हमाद, ओके मम्मा आई विल, ठीक है मामा मैं आइंदा करूँगा। ये एक बड़ी अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से एक डायलॉग कन्वर्सेशन हुई है। इसमें जिस तरह से मामा ने रिस्पॉन्ड किया है, हमाद ने रिस्पॉन्ड किया है, उन सब की जो कन्वर्सेशन है वो एंड हुई है पॉजिटिव नोट पे। मदर ने उनको एक एडवाइस दी है और हमाद ने आगे से कहा, जी मामा मैं ऐसे ही करूँगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं किस तरह से एक अच्छा ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट तैयार हो जाता है। आपने भी घर में ऐसे कोशिश करनी है इस किस्म के कन्वर्सेशन बिल्डअप करने की। Now you have the group activity. After that, work in groups and write a few sentences on any of these objects. आपने ग्रुप बना के अपने दूसरे फेलोज के साथ एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें आपने कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो ऑब्जेक्ट आपको गिवन है। मून, स्टार्स, रिवर, माउंटेन, फ्लावर, वैली, ये सब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, सब इनके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे रेनबो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और नेचुरल है। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट्स में आपने इनके बारे में लिखना है, सेंटेंसेस लिखने हैं। लाइक यू कैन से द मून इज़ वेरी ब्राइट टुडे, इस तरह से आपने सेंटेंस बनाने हैं। डू नॉट यूज the name of that object in your description. Now read aloud your description and ask other groups to guess the answer. ओके आपने सेंटेंसेस को इस तरह से यूज करना है कि उसमें आपके ऑब्जेक्ट का नेम शामिल ना हो। आप पूछना चाह रहे हैं अगर चांद के बारे में, मून के बारे में, लेकिन आप कुछ ऐसे सेंटेंस लिखें कि इट्स अ ब्राइट थिंग दैट स्पार्कल्स ओवर द स्काई एट नाइट। इस तरह से आपके जो अदर मेंबर्स हैं, जो ग्रुप में दो और लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो गेस कर सकते हैं कि किस तरह से आपने जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो क्या चीज़ हो सकती है। वो आपको बता सकते हैं मून है, स्टार्स हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आपने ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कुछ ग्रुप में मेंबर्स के साथ काम करना है और कुछ भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्ड्स हैं, इनको आपने यूज करना है, लेकिन इनका नाम लिखे बगैर इनकी डिस्क्रिप्शन बयान करनी है। और अकॉर्डिंग टू दैट डिस्क्रिप्शन जो आपके दूसरे मेंबर हैं वो गेस करेंगे कि आपने कौन सा वर्ड चूज किया था। Now at the end we have glossary. Glossary mean the meanings of difficult words. हमने टेक्स्ट में भी इनको काफ़ी देख लिया है कि किस तरह से डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए, बट ग्लॉसरी में भी देख लेते हैं। ब्रिज, students, as I have told you that the word bridge is a noun and it means structure across a stream or river. एक ही कंस्ट्रक्शन है, जैसे रोड होती है ऐसे पुल होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक बनाया जाता है। और जब हम वर्ड यूज करेंगे ब्रिजेस, तो ब्रिजेस का मतलब हो जाएगा वर्ब, लिंक, कनेक्शन, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करना जो होता है वो ब्रिजेस कहलाएगा। सो इट्स अ स्ट्रक्चर अक्रॉस अ स्ट्रीम और अर्थ। देन
the earth, the planet on which we live. अर्थ हमारे पास है ज़मीन, ऐसा planet जिस पे हम रहते हैं. Heaven. Heaven is a paradise. We have discussed these meanings also in the difficult words pronunciation. Prettier, more beautiful, इसमें हमारे पास है word ज़्यादा beautiful के लिए हम use करते हैं. It's a comparative word. Then rainbow, bow of colors, 7 colors, and sail, to move across the water. The students, try to practice this unit as much as you can at home and do all of these exercises and mark them complete on your book. I'm going to turn off class. Thank you so much for joining. Allah Hafiz.